Okay, now we've got another short passage. Preparing for a virtual job interview. अब virtual interview क्या होगा कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं कंपनी की वेबसाइट पे जाके, पूरा एक पैनल बना हुआ है, वो कैमरा में आपको देख रहे हैं, एक बंदा इधर बैठा हुआ है, किधर बैठा हुआ है, कोई क्वेश्चंस अपीयर हो रहे हैं एंड ऑल दैट, उसको हम कहते हैं वर्चुअल जॉब इंटरव्यू. एक आपका इंटरव्यू होता है जॉब का जो आप फिजिकल जाके देते हैं, और एक होता है आपका वर्चुअल job interview. So preparing for a virtual job interview. Okay, all right, let's see. इसके बाद हमारे questions हैं, and in questions we've got questions 22 to 27. Complete the sentences below. Choose one word only from the text for each answer. अब one word only है आपका, और one word only में आपने ये देखना है कि किस तरह से आप इसको आंसर करेंगे. Question number 22. Some companies prefer to interview job applicants digitally because of. अब रीजन क्या है? because of, और उसके बाद वर्ड आया है lower. अब lower का वर्ड अंडरलाइन करें और इसकी जगह पे लिखें reduce. lower को अंडरलाइन करें और इसकी जगह पे वर्ड लिखें reduce. ठीक है, अब वापस चलें पैसेज में, पहली लाइन से पढ़ते हैं. Businesses are always looking for new ways to increase efficiency and profits. For example, organizations often reduce costs by conducting virtual job interviews. तो क्या होगा? Because of lower cost. Lower की जगह पे word आ गया reduce. So correct answer is costs. Question number 23. As with the standard recruitment process, virtual recruitment opens with. अब opens with को underline करें. अच्छा, जब कोई चीज़ किसी चीज़ से ओपन होती है इसका मतलब है वो उससे स्टार्ट होती है. जब कोई चीज़ किसी चीज़ से स्टार्ट होती है तो इसका मतलब है कि वो फर्स्ट स्टेप होता है. अगर मैं ये कहता हूँ योर IELTS प्रेपरेशन ओपन्स विद लिसनिंग, या मैं ये कहता हूँ योर IELTS प्रेपरेशन स्टार्ट्स विद लिसनिंग, तो दोनों एक ही चीज़ है. अब आपने क्या करना है? आपने ये देखना है कि सबसे पहली चीज़ क्या है. लेट्स गो बैक. स्टैंडर्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है, ये आपको मिलेगा सेकंड पैराग्राफ में. सब लोग सेकंड पैराग्राफ पे आए. हाउ अ वर्चुअल इंटरव्यू इज द सेम. द टिपिकल इंटरव्यू प्रोसेस यूजुअली इंटेल्स मल्टीपल स्टेप्स. फर्स्ट देयर इज स्क्रीनिंग. अब फर्स्ट देयर इज स्क्रीनिंग, और यहां पे क्या बोला? वर्चुअल रिक्रूटमेंट ओपन्स विद स्क्रीनिंग. ठीक है, ओपन्स विद स्क्रीनिंग एंड फर्स्ट देयर इज स्क्रीनिंग. अब लिखना क्या है कि ओपन्स के साथ लिख लें फर्स्ट. जहां पे भी ओपन का वर्ड आएगा फर्स्ट का वर्ड ढूंढना है, फर्स्ट का वर्ड आएगा ओपन का वर्ड ढूंढना है, एंड ऑल दैट. क्वेश्चन नंबर 24. Applicants should read any details about the advertised post carefully and pick out important dash which they can discuss if necessary. Applicants should read any details about the advertised post carefully. थर्ड पैराग्राफ पे आइए. Virtual interviews follow the same steps, so you will need to focus on the same core topics. Core का क्या मतलब है? core का मतलब important. Center कहाँ से आ गया? Core. Core means important. तो आंसर क्या होना चाहिए? Topics. Well done. So pick out important topics, and there they mention you will need to focus on the same core topics. और आगे लिखा हुआ है identify what the critical topics are. अब जो critical का word है वो भी important के लिए है, और दोनों ही आंसर ठीक है, दोनों वर्ड सेम ही है. identify what the critical topics are. identify की जगह पे वर्ड आ गया pick out, और critical की जगह पे वर्ड आ गया important. right? Are based on the job description and prepared to talk about them. और prepared to talk about them की जगह पे क्या आ गया? They can discuss if necessary. तो 24 का आंसर क्या होगा? Topics. अब इंग्लिश का लेवल ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, और आप वहीं खड़े हुए हैं. अब थोड़ी सी खामोशी छाएगी, एसी की आवाज़ आएगी आपको. राइट?
All right, let's go on. Question number 25. It is a good idea for applicants to check if they can be clearly understood. अब imagine करें कि आपका IELTS का speaking का test हो रहा है ऑनलाइन स्पीकिंग का टेस्ट होता है, तो वो क्या लगाते हैं आपको? हेडफोन्स लगाते हैं, ठीक है, हेडफोन होता है, उसके आगे माइक होता है एंड ऑल दैट. बिल्कुल ऐसे ही ये वर्चुअल इंटरव्यू है जो आप स्क्रीन के सामने बैठ के देते हैं, कैमरा लगा होता है, आपने हेडफोन लगाया होता है एंड ऑल दैट. अब वो क्या बोल रहे हैं? इट इज़ अ गुड आइडिया फॉर एप्लीकेंट्स टू चेक इफ दे कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड व्हेन दे यूज अ डैश. अब कौन सी चीज़ है जो वो यूज़ करते हैं, तो कैंडिडेट को चेक करना चाहिए क्या उसको क्लियरली समझ आ रही है एंड ऑल दैट. So it's the how a virtual interview is different. ये वाली हेडिंग है और इसका सेकेंड पैराग्राफ. मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिल गया. अब मैं यहां से पढ़ रहा हूं और आपने देखना है कौन सी चीज है जो वो यूज करते हैं. मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज ग्रेट व्हेन इट वर्क्स बट अ पेन व्हेन इट डजंट. सो इट्स वाइज टू चेक यू कैन ऑपरेट योर वेबकैम. अब वेबकैम का ताल्लुक जो है, वापस आए क्वेश्चन पे, इट इज अ गुड आइडिया फॉर एप्लीकेंट्स टू चेक इफ दे कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड. नाउ हाउ विल यू बी अंडरस्टूड? विद द हेल्प ऑफ योर कैमरा और विद द हेल्प ऑफ योर वॉइस. अगर खाली कैमरा चल रहा है, आवाज नहीं जा रही, तो क्या कोई बंदा आपको समझ सकता है? लेकिन अगर आपकी आवाज जा रही है, सो समवन कैन अंडरस्टैंड यू, ठीक है. सो वेबकैम इज नॉट द आंसर. आगे पढ़ते हैं. Especially if you don't use it often. Test the headset too and find out how intelligible your voice sounds. How intelligible your voice sounds means how clear your voice is. Now what does it mean? Headset, exactly. Use a headset. And for if they can be clearly understood. For clearly understood, they use the word find out how intelligible your voice sounds. Okay? So answer is headset. Question number 26. Applicants may not be familiar with dash that the person conducting the interview will use. Now the person who is conducting the interview will use something, some application, and candidate will not be familiar with that, so they should try it out. Now please come to same paragraph after headset. Headset 2 and find out how intelligible your voice sounds. Last line. It's also wise to establish what software the interview is going to work with and give it a trial run. It का क्या मतलब है? Software. Exactly. Answer क्या होगा? Software. It is also wise to establish what software interviewer is going to use. उसकी जगह पे क्या है? Applicants may not be familiar with the software that the person conducting the interview. अब person conducting the interview की जगह पे क्या आ गया? Interviewer. Very good. Interviewer. The interview will use, so they should try it out. They should try it out की जगह पे क्या word आ गया? Give it a trial run. Give it a trial run. Answer क्या हो जाएगा? Software. Question number 27. It is very useful to go through a dash. अब underline करें go through को. Very useful to go through a dash of the interview. कि interview की कोई चीज़ आपने go through करनी है with someone, किसी के साथ, friend के साथ, like companion and all that. Playing the part of the interviewer. कि वो रोल प्ले करेगा इंटरव्यूअर. जैसे कल हम कर रहे थे ना, एक कैंडिडेट बना, एक एग्जामिनर बना, तो इट इज़ वेरी यूजफुल टू गो थ्रू आ डैश. कि कौन सी चीज़ आपने करनी है जिसमें कोई फ्रेंड जो है वो इंटरव्यूअर का रोल प्ले करेगा. राइट? प्लीज कम टू सेकेंड लास्ट पैराग्राफ. The most important part of your preparation is to run through everything first as best as you can. Have a friend conduct a rehearsal. Good. Have a friend conduct a rehearsal. So it is very useful to go through a rehearsal of the interview with someone. Someone की जगह पे word आ गया friend. Rehearsal with you before the big day, and this will help you know how to behave in front of the camera. 27 का आंसर क्या हो जाएगा? Rehearsal. Okay. Good.